Assalamu alaikum. Welcome to Tutors Academy. My name is Akif Nawaz Khan and I'm here with another video. And today we'll be talking about verb and different types of verbs like transitive, intransitive, and ditransitive verb. So it's our second lecture and we'll be talking about all of them in detail and we'll try to explain and understand it in a very simple way. So first of all, before discussing it, before discussing transitive, intransitive, and ditransitive, we'll be talking about verb. So verb basically is an action that is going on and that we talk about in a sentence. Like if I give you a very simple example, that the dog is barking. So if you look at this sentence, we can see that the action that is going on is barking. So the dog is a subject and which is performing an action that is barking. So that is why we can say that barking is an action because it is something that is going on and that is being done by the dog. अगर हम simply उर्दू में कहें तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक सेंटेंस में किसी काम को किया जाता है या हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ वर्ब, जिसको उर्दू में हम यूजुअली फेल कहते हैं. अच्छा, so that is all about the basic definition of verb. Now let's turn our heads towards transitive, intransitive, and ditransitive verbs. So first of all, we have a transitive verb. So what is a transitive verb? So simply we can say that a verb that requires an object to give us complete meaning. Simply I can write it that a verb that requires an object to make sense. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट का होना उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए लाजमी होता है, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट दे enjoyed the match. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम देखें, so what is the process that is going on, the action that is being taken place, that is the process of enjoying. So we can say that this is a verb, but this verb requires an object to give us complete sense. अब अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास मैच जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको साइड पे कर लूँ और फिर ये मैं इसको प्रोनाउंस करूँ कि दे इंजॉयड, so इसका मतलब ये हुआ कि it does not give us complete sense. So that is why we can say that this verb is a transitive verb because it requires an object to give us complete sense or meaning. Acha, now let's jump to understand ditransitive, because transitive and ditransitive both are interlinked with each other, and ditransitive is a verb that requires two objects to give us complete meaning or make complete sense. और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं उर्दू में कि एक ऐसा वर्ब जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें दो वर्ब्स चाहिए होते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट अ वेरी सिंपल सेंटेंस, अगर मैं कहूँ कि ही गेव मी अ बुक. अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो व्हाट इज़ अ वर्ब? Giving, the process of giving. This is an action that is taking place, so it's a verb. And here we have two objects. The first one is me and the second one is a book. So there are two objects for this verb, or we can say it in another way, that this verb takes
two objects in a sentence, so that is why we can call it a dry transitive verb. अच्छा, सो ये इन ट्रांजिटिव से पहले मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव जो है वो समहाउ इंटरलिंक्ड है, बिकॉज इन ट्रांजिटिव वर्ब a verb requires single object, whereas in ditransitive verb a verb requires two objects to give us complete meaning. अच्छा, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट intransitive verb, जो कि इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है. इजी है बट डिफरेंट है. चले लेट्स टॉक अबाउट ditransitive verbs. Sorry, intransitive verb. Let's talk about intransitive verbs. So हम कह सकते हैं कि intransitive, अच्छा, अब intransitive verbs are those verbs that do not require an object to give us complete meaning. So simply I would say कि verbs that do not require an object are objects to give us complete मीनिंग इन अ सेंटेंस. ओके, अगर मैं इसको सिंपली उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो इट वुड बी लाइक दिस कि ऐसे वर्ब्स, ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती या जिनके साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया जाता और फिर भी वो हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, सो उसको हम कह सकते हैं कि दीज आर intransitive verbs. Now for example, if I say that the sun rises, sorry, अगर मैं सिंपली कहूं कि द सन राइजेस इन द मॉर्निंग. अच्छा, अब आप अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, सो वी कैन डेफिनेटली गेट द आइडिया दैट राइजिंग इट्स एन एक्शन. एंड हमने स्टार्ट में कहा था कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज verbs. So this rises is a verb in this sentence, and we have no object here. We have no object here in this sentence. So simply we can say that the verb rise is an intransitive verb. But सिर्फ इस सिचुएशन में, सिर्फ इस सेंटेंस में ये हमारे पास क्या है? हमारे पास intransitive verb है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये राइज जो है ये हमेशा ही इंट्रांजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा. सो अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि आया ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है, सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द वे अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस. जिस तरह लाइक मीनिंग्स डिफर ऑफ वर्ड्स as they are used in a sentence. So same is the case with the transitivity and intransitivity of a verb is solely dependent on the use of a specific verb in a sentence. So जिस तरह हम verb को use करते हैं sentence में, उसके बाद ही हम decide कर सकते हैं कि आया whether it's a transitive, intransitive or ditransitive verb. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा. So that's all from my side. और ये बहुत ही सिंपल है. अगर मैं इनको सिंपली क्या करूं, डिस्क्राइब करूं इन अ सिंगल मिनट, तो ये इस तरह होगा. ट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट को लगता है जो हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है. जबकि इंट्रांजिटिव हमारे पास वो होते हैं जो कि वो सेंटेंसेस या वो वर्ब्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है और उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. जबकि हमारे पास डाई ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम दो ऑब्जेक्ट्स को लगाते हैं या जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लग जाते हैं इन अ सेंटेंस, और तब जाके वो हमें क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, you can write down your queries and questions in the comment section.
और आप हमें साथ में ये भी बताएं कि if you want us to discuss any of the topic related to grammar or related to English subject, we would be really happy to do that, and that will be our priority. So that's all. Thank you so much. Allah Hafiz.